This is for exercise 5.1 question number 2 of class 9. This is question number 2. Give a definition for the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? Number 1 is parallel lines. Number 2 perpendicular lines. Number 3 line segment. Number 4 radius of a circle. And number 5 square. First of all, we will define parallel lines, right? Parallel lines can be defined. Two straight lines which have no point in common are said to be parallel to each other. Dear friends, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 9. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है गिव रीजंस, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, what are they and how might you define them. ये हमें करना है. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, राइट? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं. नंबर 1 पैरेलल लाइंस. नंबर 1 पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस. Two straight lines. Two straight lines. Two straight lines. Two straight lines. Two straight lines which have no point, which have no point in common, which have no point in common, which have no point in common are said to be parallel to each other. Parallel to each other. That means अगर दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, पी क्यू एंड आर एस, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो उसे हम पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट. यस, द टर्म्स आर स्ट्रेट लाइंस एंड पॉइंट. दो टर्म्स को हमको डिफाइन करना चाहिए, स्ट्रेट लाइंस और पॉइंट. उसके बाद हमें पैरेलल लाइंस डिफाइन करना चाहिए, राइट? हम लिखते हैं पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइंस. Point and straight lines will have to be defined, will have to be defined first. Straight line और parallel lines हमें straight lines और point हमें define करना चाहिए, right? What is a point? A point is that which has no part. A point is that which has no part. Which has no part. Right? Straight line का definition होगा, straight line is breadthless length. A straight line is breadthless length. Breadthless length and it is line, and it is a line which lies evenly
with the points on itself, with the points on itself, राइट। जिससे बहुत सारा पॉइंट है, इसे हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। हम फिर से इसे डिफाइन करते हैं। पैरेलल्स टू स्ट्रेट लाइन्स व्हिच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। Point and straight lines will have to be defined first. A point is that which has no part. A straight line is breadthless length and is a line which lies evenly with the points on itself. ठीक है, अभी हम डिफाइन करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर्स हम अभी लाइन डिफाइन करेंगे। ठीक है, नंबर टू में क्या है हम देख लेते हैं। नंबर टू में है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, नंबर टू परपेंडिकुलर लाइंस। If one among two parallel lines, one among two parallel lines is turned by 90 degree, the two lines become perpendicular to each other. The two lines become perpendicular to each other, perpendicular to each other. यहाँ पर हमें दो चीज़ डिफाइन करना है। एक है पैरेलल लाइंस, नंबर वन पैरेलल लाइंस डिफाइन करना चाहिए, एंड रोटेशन थ्रू 90 डिग्री, रोटेशन थ्रू 90 डिग्री, rotation through 90 degree should be defined first, हमें यहाँ पर दो चीज़ डिफाइन करना चाहिए। एक है पैरेलल लाइंस एंड नंबर टू इज रोटेशन थ्रू 90 डिग्री, राइट। रोटेशन थ्रू 90 डिग्री पैरेलल लाइंस मैंने पहले डिफाइन किया है नंबर वन में, और ये रोटेशन थ्रू 90 डिग्री ये हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। रोटेशन थ्रू 90 डिग्री, रोटेशन थ्रू 90 डिग्री means a line, suppose this is a line, this line should be rotated in clockwise or anti-clockwise through 90 degree, that is rotation through 90 degree. This one is, right, this line is rotated 90 degree, right. Rotation through 90 degree means one line should be turned 90 degree, that is rotation through 90 degree, right. These are the two things we should define, that is one is parallel lines and number two is rotation through 90 degree. यहाँ पर क्या बोला गया है, if one among two parallel lines is turned by 90 degree, the two lines become perpendicular to each other. अगर दो पैरेलल लाइन्स है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन्स में कोई भी एक पैरेलल लाइन्स को अगर 90 डिग्री रोटेशन करते हैं, 90 डिग्री रोटेशन करते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा।
जैसे ये वाला लाइन, ये लाइन को अगर 90 डिग्री करते हैं तो ये कैसे होगा, ऐसे होगा, और ये लाइन दोनों 90 डिग्री होगा, राइट। अब होगा क्वेश्चन नंबर 3, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम अभी डिफाइन करेंगे, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन सेगमेंट। 3 में है लाइन सेगमेंट, नंबर 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट, ए लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज ए लाइन सेगमेंट। ए लाइन with 2 endpoints, a line with 2 endpoints, a line with 2 endpoints is a line segment, is a line segment, line segment. A line segment define करने के लिए हमें line and point have to be defined before. line और point हमें define करना चाहिए। line and point, line and point should be defined first, should be defined, should be defined first. ये डिफाइन करने के पहले हमने लाइन और पॉइंट डिफाइन करना चाहिए। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? ए लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज लाइन सेगमेंट। ए लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज ए लाइन सेगमेंट। जैसे एक लाइन सेगमेंट है, 2 एंड पॉइंट है ए और बी, और इसे फिक्स्ड लेंथ है, राइट, फिक्स्ड लेंथ, इट शुड हैव ए फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ, तो इसे हम इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल को हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। नंबर 4 हम डिफाइन करेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस of a circle, of a circle, radius of a circle, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। The line segment with one end point at the center and the other at any point on the circle. The line segment with one end point, with one end point with one end point at the center, and the other at any point on the circle, ये डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीज़ डिफाइन करना जरूरी है। एक है सेंटर, राइट, सेंटर शुड बी डिफाइंड फर्स्ट, सेंटर शुड बी डिफाइंड फर्स्ट, शुड बी डिफाइंड, सेंटर शुड बी डिफाइंड फर्स्ट, से हमें डिफाइन करना चाहिए, राइट। सेंटर में डिफाइंड एज अ पॉइंट, सेंटर may be defined as a point, center may be defined as a point inside the circle, which is at the same distance from all points on the circle, from all points on the circle, ये हमारा है रेडियस ऑफ ए सर्कल। अगर ये सर्कल से हमें 2 पॉइंट डिफाइन करने चाहिए, एक है सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, and the length is, this is radius of a circle, right.
सेंटर हम डिफाइन करते हैं, सेंटर में भी डिफाइंड एज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल व्हिच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन, जितना भी सर्कल पॉइंट है सबका डिस्टेंस सेम होगा, तो ये हमें रेडियस बोल सकते हैं, राइट, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज रेडियस। एट द नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्वायर। स्क्वायर का डिफाइन हम कैसे करेंगे, ठीक है। स्क्वायर का डिफाइन करने के लिए हमको डिफाइन करना है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर डेफिनेशन करना है हमें स्क्वायर। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे स्क्वायर नंबर 5। नंबर 5 में है स्क्वायर, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्क्वायर SQUARE, राइट, स्क्वायर। A quadrilateral with all sides equal and all angles right angles is a square. A quadrilateral with all sides equal and all angles right angles is a square, इससे पहले हमें डिफाइन करने चाहिए क्वाड्रिलेटरल, राइट, क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल हमें डिफाइन करना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल and angles should be defined first, should be defined first। quadrilaterals और angles हमें डिफाइन करना चाहिए। A quadrilateral is a figure with 4 sides. A quadrilateral is a figure with 4 sides, राइट, ये हमें डिफाइन करना चाहिए। एंगल जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, एंगल ये हमारा एंगल होता है जैसे ABC। एंगल का डिफाइन क्या होता है, 2 rays BA and CA make an angle at the point B, that is an angle ABC, angle ABC, राइट। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। A quadrilateral is a figure with 4 sides. Quadrilateral क्या है, 4 sides, ए फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका 4 साइड होना जरूरी है। ए quadrilateral with all sides equal, अगर सब साइड इक्वल होगा, दिस साइड इक्वल होगा, और जो भी एंगल है ये 90 डिग्री होगा, तो इसे हम स्क्वायर बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का स्लाइड्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा चैनल का मेंबर होना पड़ेगा, और वहाँ से आप जान सकते हैं कि वहाँ पर हम फुल्ली डिस्क्राइब कर चुके हैं कि किस तरह से इस तरह का स्लाइड हम बनाते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कलर्ड फॉर्म में आएगा, और जो इन्फॉर्मेशन है ये रहेगा, और इसे हम किस तरह से व्हाइट बोर्ड में लाते हैं और उसकी किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, पूरा प्रोसेस हम उसमें दिखाए हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से व्हाइट बोर्ड में पूरा क्वेश्चन को हम कलर्ड क्वेश्चन में लाते हैं व्हाइट बोर्ड में, और उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आप हमारे चैनल मेंबर में ज्वाइन कीजिए और देखिए कि किस तरह से हम इस स्लाइड को बनाते हैं और उसे व्हाइट बोर्ड में ला के पढ़ाते हैं। डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thank you everybody for watching this video.